करीब करीब श्री एम सनमुगम। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। Thank you, Chairman, sir. I demand to fix minimum support price of tea and pay fair wages to tea plantation workers. Sir, plantation industry is actually agro-based industry like tea, coffee, rubber, spices. This industry is a labor-intensive industry, providing assured employment to several lakhs of people directly and indirectly, apart from proving itself as a good earner for foreign exchange. It also contributes to the protection of the sustainable environment in hilly areas and forest land. Under the provisions of the Plantation Labour Act, the management is obliged to provide the workers facilities like housing, medical, education, etc. About 60% of price realized of their products, especially tea, is being spent on wages and such related items. The tea producers are unable to fetch desired prices for their finished goods due to cartelization of the actionees. To prevent any competitive price being allowed to bid in the action centers, there is an obvious mismatch between the cost of production and actual price realized, which leads to acute financial crisis, and many tea planters are closed and tea plantation workers are suffered. I would therefore urge upon the Union Government to determine minimum support price on the basis of Swaminathan Committee recommendation to sustain the tea plantation industry. The government should intervene and see that unfair trade practice cartelization in the action price process are stopped and tea growers get reasonable price for their produce. Tea plantation workers in Assam and Northeast are not paid fair wages, and they are paid only 200 per day, whereas the workers in Tamil Nadu and Kerala are getting more than 400 rupees per day. Therefore, the government should ensure that the tea plantation workers in Assam and Northeast are also paid fair wages so that they could lead a dignified life with their families. Thank you, sir. श्री संजय सिंह। धन्यवाद मान्यवर, आपने इस बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बात कहने का मौका दिया। मान्यवर, पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हुआ है, इससे यह साफ लगता है कि इनको देश के शुरू कर दिया। यह सरकार का चरित्र है। बाहर भी नहीं बोलने देते, यहां भी नहीं बोलने देते आप लोग। ऑनरेबल मेंबर सर, प्लीज मान्यवर, हैव योर से। नो वन शुड बी ऑन द चेयर मान्यवर, एक्सेप्ट द वन स्पीकिंग। मान्यवर, ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3000 छापे विपक्ष के नेताओं पे मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी कन्विक्ट कर पाई, मात्र 0.5%। 0.5%। सर, मैं सर, ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है सर। सर, ऑनरेबल मेंबर्स, वन ऑफ द मेंबर्स इज ऑन लेग्स। ऑनरेबल मेंबर्स, प्लीज टेक। मैं ये कह रहा हूं सर, प्लीज ये ईडी फर्स्ट 20,000 करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है? टेक योर सीट। ये ईडी 10,000 करोड़। Take your seat. Honorable members, when a very distinguished member of this House, while giving his input, referred to a communication written by the Honorable Chief Minister to the Honorable Prime Minister, I directed the Honorable member to put that on table of the House. Why I did it? Because in this House, we cannot allow any member to give out facts that are not substantiated, and that constitutes a very serious breach of privilege. I am very particular about it, whether it is this side or this side. Anything being spoken in this House cannot be in figure. It has to be indicated with precision, with sanctity, and with ownership. And that is why, to a very distinguished member, where it was not required, I wanted that practice to be there, that if a chief minister of a state has sent a communication
to the Honorable Prime Minister and details are not made available, that should be on record. That will be shared with the members. So the Honorable Member can make his input. But while making the input, it has not to be a speech. The Honorable Member must focus on actual figures, and I will call upon the Honorable Member to put the relevant record on the table of the House. If the record is not there, I may seek guidance from the Honorable Members that will be breach of privilege of this House. Because this House, one second, this, number one. Number two, this House has, this House, one second, this House has to be a platform of putting across everything that concerns the public at large. Any expression cannot be controlled here. The only controlling factor is we have to believe in sanctity of the document. A newspaper report, an opinion given by someone is absolutely of no consequence. What I need is legally admissible documentation must be the premise of making an allegation. Honorable Member. बहुत अच्छी बात आपने कही सर, बहुत ही अच्छी बात आपने कही सर। एक मिनट बोलने दीजिए सर, एक मिनट बोलने दीजिए सर। प्रियंका चतुर्वेदी इस सदन की प्लीज मुझे one second. Sir, don't show up paper like this. नहीं सर, let us not have that. ऐसे बोल देते, ऐसे otherwise we'll be engaging in and honorable members, leader of the House, leader of the opposition. सर, धन्यवाद, आपने मुझे दो बात कहने के लिए परमिशन दी। तो इस सदन में जो आपने कही कि फैक्ट्स, फिगर्स और ऑथेंटिसिटी के साथ बात करना चाहिए। सर, जो भी सदस्य यहाँ पर बात करते हैं वो या तो अनस्टार्ड क्वेश्चन से जो रिप्लाई मिलते हैं या स्टार्ट क्वेश्चन से जो रिप्लाई मिलते हैं उस आधार पर भी बात करते हैं। और मीडिया जर्नल, आप उसको मानो या न मानो, आप उसको कह सकते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन हमको कभी मीडिया का भी फिगर्स लेना पड़ता है, जर्नलिस्ट जो आर्टिकल लिखते वो भी लेना पड़ता है, कभी सदन में अनस्टार्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई आते वो लेना पड़ता है, या स्टार्ट क्वेश्चंस के रिप्लाई वो देते वो लेना पड़ता है। उसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर बाहर बयान देते हैं वो एक बहुत बड़े आदमी होते हैं, 2 करोड़ नौकरियां देने का। अगर हम बोले तो आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी क्या है? 15 लाख का अगर हम कुछ बोलेंगे आप बोलेंगे ऑथेंटिसिटी का। अरे ये तो जबान से निकली हुई है, प्राइम मिनिस्टर के जो जबान से निकलती है हम ये समझते हैं ये उनकी ऑथेंटिसिटी है, उनके फिगर्स करेक्ट है, उस आधार पे ही हम उठाते हैं। तो इसीलिए कृपया करके आप हर बात को ये कहना। Leader of the House. अध्यक्ष जी, one second. There is Leader of the House, a- please. Honorable members, I am so glad that we are deliberating on an important issue that will give us an insightful approach how to deal with the situation on the floor of the House. We have the benefit of leader of the opposition. Anything reflected on the platform of this theater by way of starred question response or unstarred carries sanctity. I will have a meeting with the floor leaders. I'll have meeting with the floor leaders. I am of the opinion so far that this platform is very august platform. Anything reflected here, the person must own the statement. And that statement has to be on the strength of authenticated, sanctified documentation. If the honorable members and floor leaders have a perception on it, I will have a special meeting with them tomorrow, get their input, and we will have a way forward stance, Leader of the House.
Honorable Chairman, sir, this has become a very regular practice of shoot and scoop. You just make any allegations. One second, please. Honorable member, Sonia, would you please take a seat? Are we, honorable leader of the House, I think I have made my point very clear. One second, wait for your turn. Doesn't matter, take your seat. Please take your seat. Sanjay Singh, take your seat. Take your seat. Take your seat. Miss Priyanka Chaturvedi, take your seat. Number one. Number two, it does not look nice for me. I'm getting a lot of disturbed inputs from academia for students that every time there is something and there is a trigger to rush to on the seat, why be there crosstalk? Honorable member, I'm here. If you have to say to me, forget about it. They are being dealt with equally on the same footing. So let's not have it. We heard the leader of opposition in rapt attention. He had a point to say. Leader of opposition has made 4 important points. They are the points we need to deliberate. Similarly, leader of the House, and I'm sure the leader of the House would maintain the same level so that we act towards a mechanism, we evolve a system, and we abide by that. Leader of the House. Honorable Chairman, sir, of late we are finding that it has become very simple. There are a number of websites, a number of social media platforms on which people make all sorts of claims which are unsubstantiated by fact. They are not backed by any starred or unstarred questions, response in Parliament. They are not even backed by RTI. Suggestion. We have, Honorable Chairman, I need a minute. We have a lot of cases where that when you fact check it, Your suggestion. you come out with fake claims. Your suggestion. Therefore, when a very senior member of the House, who is also sitting in the front row, makes a claim that 3,000 political, Rajneetik 3,000 लोगों के ऊपर छापा. I mean, I think it's completely erroneous. Your point is he has made it without any substance. Similarly, sir, he is making allegations which are before the court. The court demands, and there is a special directive of the court that action should be taken on MPs, MLAs, elected representatives who are found to be culpable in any economic or other offence. We are on the contrary doing a public service. हम देश की जनता की हितों की रक्षा कर रहे हैं जो चाहती है कि जो राजनीतिज्ञ है वो हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोप्राइटी को मेंटेन करें और देश का कोई कानून इम्यूनिटी नहीं देता चेयर और देश का कोई कानून राजनीतिक लोगों को इम्यूनिटी नहीं देता. Take your seat now. Honorable members, please. Honorable members, if I have chosen to hear leader of the opposition who volunteered to make an input and leader of the House, no further discussion on the point. I will have a meeting with the floor leaders and also with leaders of the smaller parties, nominated members and independents, and we will have a mechanism. I personally believe that this theatre is too sanctified to get an input of which the member does not take responsibility. And if any member makes a statement in any manner whatsoever, placing reliance on anything, and that can't be sanctified, it has consequences. Sanjay Singh, and confined to your point, don't flank papers. Just make your point. उनको आपने अलाउ किया, मुझे ना अलाउ करें, मैं वैसे ही बोलूंगा, बगैर पेपर के बोलूंगा.
अब इसी में अगर नो पॉइंट इन जीरो आवर। सर यहां इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। उनके जवाब में सरकार ने यह बताया कि 3000 छापे ईडी के द्वारा मारे गए और मात्र 23 लोगों को कन्विक्ट किया गया। मेरा इनसे सवाल यह है कि ये ईडी और सीबीआई 20,000 करोड़ के लुटेरे नीरव मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, विजय माल्या पे कार्रवाई नहीं करती, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई नहीं करती, ललित मोदी पे कार्रवाई नहीं करती, रेड्डी ब्रदर्स पे कार्रवाई नहीं करती, येदुरप्पा पे कार्रवाई नहीं करती, व्यापम घोटाले पे कार्रवाई नहीं करती। जितने भ्रष्टाचारी आपसे जुड़े हुए हैं उन पे कार्रवाई नहीं करते। संजय रावत जी यहां बैठे 100 दिन जेल में रहे। मनीष सिसोदिया के घर पे आपने 14 घंटे छापेमारी की। सत्येंद्र जैन को आपने जेल में रखा है। अरविंद केजरीवाल पे छापे मारते हैं, सारे मंत्रियों पे छापे मारते हैं। बंद करके सबको जेल में डाल दीजिए। दादागिरी से अगर देश चलाना चाहते हैं, तानाशाही से चलाना चाहते हैं, सबको जेल में डाल दीजिए सर। बंद कर दीजिए विपक्ष। 100 दिन रह के आए सर संजय रावत। Point well taken. Take your seat. 100 दिन रह के आए, बाद में कह दिया इलीगल है। Take your seat. बाद में कह दिया इलीगल सर। Please take your seat. सर मेरा 3 मिनट का समय था, 1.5 मिनट इन लोगों ने खाया है। आपसे अनुरोध है 1.5 मिनट दीजिए। मैं सर ऑनरेबल दिल्ली one सरकार second. इन लोगों ने क्या क्या Honorable कार्रवाई member. की वो बता के बात खत्म करूंगा। Honorable member, let me caution you, and I'm using the word with sense of responsibility. Are you aware when a point of order can be raised? Not in 0 hour. But not in 0 hour, not in 0 hour. So, honorable member, 1 second, it's over. Honorable member has made some reflections. You all are aware, in public domain, it will be difficult to sustain them. To make a sweeping statement on this platform that no action is being taken, where multiple adjudicatory mechanisms have taken place. We cannot allow this platform to be used that you say nothing has been taken. Make your point carefully. I will examine all that the honorable member has said, and the honorable member will be called upon to substantiate it on the floor of the House and leave it on the table. I now... इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पूरब का ऑक्सफोर्ड इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के कभी कैफी आजमी ने कहा था कोई तो सूद चुकाए, कोई तो जिम्मा ले, उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है, उसी विश्वविद्यालय का कैंपस आज पुलिस के बूटों की धमक से रौंदा जा रहा है। 400% छात्रों की फीस बढ़ा दी गई है। ग्रेजुएशन की फीस 975 रुपए से बढ़ा करके 3,900 रुपए कर दी गई है। पोस्ट ग्रेजुएशन की फीस 1,375 रुपए से बढ़ा करके 4,651 रुपए कर दी गई है। हॉस्टल की फीस 15,000 से बढ़ा करके 45,000 कर दी गई है। छात्र पिछले 90 दिन से आमरण अनशन कर रहे हैं। जिस विश्वविद्यालय ने इस देश को पंडित मोतीलाल नेहरू दिया, पंडित मदन मोहन मालवीय दिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन दिया, शंकर दयाल शर्मा दिया, विश्वनाथ प्रताप सिंह दिया, चंद्रशेखर दिया, महादेवी वर्मा दिया, अर्जुन सिंह दिया, फिराज गोरखपुरी दिया, उसे हम क्या दे रहे हैं? सरकार ने कह दिया कि फंड कम है, छात्रों से वसूली करके खर्चे पूरे करो। सभापति महोदय, जिस छात्र संघ भवन में इलाहाबाद में कभी अंग्रेजों के खिलाफ शहीद लाल पदमधर ने छत पे खड़े होकर के बगावत का बिगुल फूंका, जान दे दी, आज उसके गेट पर ताला जड़ दिया गया है ताकि छात्र नए अंग्रेजों के खिलाफ आवाज न उठा सकें। सभापति महोदय, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं, देश के विश्वविद्यालय के कैंपस कराह रहे हैं। हमारी आंखों में आज भी जामिया की लाइब्रेरी में भरी गई आंसू गैस की जलन मौजूद है। हमारी आंख में आज भी हैदराबाद विश्वविद्यालय के बाहर रात में खुले छत के नीचे सोए हुए रोहित वेमुला की आखिरी तस्वीर मौजूद है। हमारी आंख में आज भी, हमारे कानों में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के
कैंपस में पुलिस के राइफल के कुंदों से तोड़े गए दरवाजों की चीखें मौजूद हैं। सभापति महोदय, आपकी आंखों के सामने ये जो तस्वीर टंगी है शिक्षक राधापल्ली सर्वकृष्णन जी की, ये आपसे कह रही है कि देश के कैंपस बचाइए। जेएनयू से नजीब 6 साल से गायब है, उसकी मां की रोते रोते आंखें सूख गई हैं, दिल्ली चुप है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप बंद कर दी गई है। सभापति महोदय, मुझे सुनना पड़ेगा आपको, इस देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को, एक छात्र को सुनना पड़ेगा। मैं आपसे आखिर में यह बात कह रहा हूं कि देश के कैंपस बचाइए। हुकूमत चुप है, हुकूमत की चुप्पी खतरनाक है। फीस वृद्धि वापस ली जाए, मौलाना आजाद फेलोशिप बहाल की जाए, छात्रों का उत्पीड़न बंद किया जाए। हम इस सदन में आपके सामने सबकी फरियाद लेकर खड़े हैं। धन्यवाद। Honorable member will put on record on the table the decision referred to him by. You have made reference to a decision. Put it on table of the House. Dr. Lakshmikant Vajpayee. आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए 1857 की क्रांति नगरी मेरठ के संबंध में एक महत्वपूर्ण समस्या पर आपको सामने विषय रख रहा हूं। मेरठ में 2014 में अंबेडकर हवाई पट्टी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सौंप दी गई थी और उसके बाद मेरठ में आरसीएस योजना में छोटा एयरपोर्ट बनाने की बात हुई थी। 1500 मीटर की हवाई पट्टी है। जब उस पर जूम एयरवेज की बिड हो गई, 40 सीटर उड़ाना तय हो गया, उसके बाद अधिकारियों ने गड़बड़ करके वहां पर ATR 72 के लिए बात करनी शुरू कर दी। 2014 से किसानों की जमीन आरक्षित है एयरपोर्ट अथॉरिटी के पास और 5800 रुपए रेट तय है। न किसानों की जमीन ली जा रही है, न एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। मेरा यह कहना है कि अब अधिकारियों ने एक नया किया है कि 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाएंगे। मेरठ से कभी भी 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाने के लिए आर्थिक वायबिलिटी नहीं है। ATR 72 उड़ा दें, फिर आवश्यकता होगी तो बड़ा उड़ाना है। मेरठ से लखनऊ और इलाहाबाद, मेरठ से जालंधर और जम्मू 4 छोटे जहाजों की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं सदन के माध्यम से, आपसे भी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार तत्काल आरसीएस योजना में जिसमें छोटे एयरपोर्ट उड़ाने की बात तय हुई थी, उसको 6 महीने के भीतर उड़ाए। वहां पर टर्मिनल भवन तैयार है, 1500 मीटर हवाई पट्टी है, 300 मीटर हवाई पट्टी के लिए किसानों की जमीन आरक्षित है। अगर उसको 300 मीटर बढ़ा दें तो ATR 72 उड़ जाएगा और 270 सीटर हवाई जहाज उड़ाने की जो कल्पना है, ये अधिकारी धोखा दे रहे हैं और 1857 की क्रांति नगरी मेरठ के नागरिकों के साथ अन्याय कर रहे हैं। मैं उस अन्याय का विरोध करता हूं। डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, नर्मदे हर। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार एवं सदन का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, भारत का सड़क नेटवर्क दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है और विगत 8 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में इसका विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। दुर्घटनाएं सामान्यतः होती है, लेकिन किसी निश्चित स्थानों पर होना गंभीर चिंता का विषय है। माननीय सभापति महोदय, मैं मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र का रहने वाला हूं। आज देश में लगभग सभी लोग निमाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धार जिले में स्थित खलघाट मानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 3 के मध्य होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में जानते हैं। इस मार्ग पर न जाने कितनी माताओं ने अपने बेटों को, कितनी बहनों ने अपने भाइयों को और छोटे छोटे मासूम बच्चों ने अपने माता पिता और अन्य सगे संबंधियों को खोया है और ये दुर्घटनाएं निरंतर बनी हुई है। माननीय सभापति महोदय, इस मार्ग के गणेश घाट पर 2 किलोमीटर के दायरे में सैकड़ों दुर्घटनाएं हो चुकी है, जो कि निरंतर होने वाली घटनाओं का स्थान बन चुका है। यह एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है। इसका निराकरण अविलंब होना चाहिए। सरकारी आंकड़ों के अनुसार आज मैं सदन के समक्ष खलघाट मानपुर दूरी लगभग 50 किलोमीटर सड़क दुर्घटनाओं के विषय पर हुए एक अध्ययन का जिक्र करना चाहूँगा, जिसके अनुसार वर्ष 2016 से 2018 तक कुल 978 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें 1267 लोगों की मृत्यु हुई है। इस दौरान वर्ष 2016 से 2018 के बीच 626 माइनर बच्चे,
एवं न जाने कितने नौजवानों की जीवन लीला समाप्त हो चुकी है। क्षेत्र के जनता ने इस सड़क मार्ग पर गणेश घाट पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, मार्ग की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए कई बार मांग की है, जो आज भी लंबित है। जीवन की संपूर्ण समस्याएं मेरा सरकार एवं माननीय परिवहन मंत्री जी से विनम्र आग्रह है, निवेदन है कि इस सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए ठोस से भी ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कोई मूल्यांकन होना चाहिए ताकि कोई मां अपने लाल को और कोई बहन अपने भाई को राखी बांधने से वंचित नहीं रहे। मेरा यही विनम्र आग्रह है। जय हिंद, नर्मदे हर। श्रीमती प्रियंका चतुर्वेदी। So much honorable chairman sir. Sir, हाल ही में एम्स में जो साइबर अटैक हुआ था, उसने एक देश में जो हमारे साइबर अटैक्स का इशू है उसको हाईलाइट किया। दो चीजें हाईलाइट हुई उसमें सर, एक तो है जो डेटा प्रिवेसी की हम बात करते हैं, डेटा ब्रीच की बात करते हैं, वो सामने आई, और दूसरा कि किस तरीके से सारे सिस्टम्स क्रिपल हो जाते हैं एक साइबर अटैक के चलते, वो हाईलाइट हुआ है सर। पर उसी के चलते मैंने सर एक सेकेंड, आप पूरा सुनने की क्षमता तो रखिए सर। यहाँ पर आपने मुझे ये इजाजत दी है कि आपके समक्ष मुद्दे को रखूं और किसी और की इंटरप्शन इसमें सही नहीं है सर। तो पिछले 3 साल में 3 गुना इजाफा हुआ है साइबर अटैक्स में। हमारे जो साइबर सिक्योरिटी के फंड्स हैं वो अंडर यूटिलाइज्ड हैं, और मेरा कंसर्न फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सजेशन था, क्योंकि अब तक हमने आईटी मिनिस्ट्री का कोई स्टेटमेंट नहीं देखा है, और पिछले 3 साल में अगर हम डेटा ब्रीचेस देखें तो एयर इंडिया डेटा ब्रीच हुआ था, जिससे मलेशिया एयरलाइंस हो, सिंगापुर एयरलाइंस हो, उनको भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा था। पुलिस एग्जाम डेटाबेस भी ब्रीच हो चुका है, कोविड-19 के टेस्ट रिजल्ट्स भी लीक हुए हैं, आधार डेटा रिलीज हुआ है। तो ये मैं मानती हूं, बार बार कहा जाता है कि अब वॉर्स जो होंगी लैंड पे नहीं होंगी, साइबर स्पेस में होंगी, तो हमें अपनी आपको, और कमेटी रिपोर्ट भी कहती है कि हमें अपने आप को पुख्ता करना पड़ेगा। जो हमारे हेल्थ स्पेस में अटैक्स हुए हैं उसमें इजाफा करीब 95% हुआ है सर। तो आपके माध्यम से मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगी कि जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, डिजिटल स्पेस में हम लीड कर रहे हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में भी हमें लीड करना चाहिए, एक रेवोल्यूशन है, और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेटाबेस होना चाहिए, जिससे इस तरीके के साइबर अटैक से हम अपने देश के डेटा को सुरक्षित रख पाए। थैंक यू सर। श्री हरनाथ सिंह यादव। कमेटी में कैसा काम है मैं जानता हूँ। माननीय सभापति जी, मिला जुला के मैं आपके माध्यम से जनहित से जुड़े एक अत्यंत ज्वलंत मुद्दे की तरफ सरकार और सदन का ध्यान आकर्षित करता हूँ। महोदय, वक्फ एक्ट 1995 के प्रावधान देश के संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध हैं, क्योंकि वह न केवल न्यायपालिका की स्वतंत्रता और अहमियत को बाधित करते हैं, बल्कि देश के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को भी विघटित करते हैं। महोदय, देश भर के सभी 32 वक्फ बोर्ड के सभी सदस्य मुस्लिम समुदाय के होते हैं। उन बोर्डों के वक्फ एक्ट 1995 के द्वारा इतनी शक्ति दी गई है कि वह किसी भी व्यक्ति की किसी भी संपत्ति पर अपना दावा कर दें तो वह वक्फ की संपत्ति मानी जाएगी और उनके उस दावे को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महोदय, उदाहरण के लिए आप झुंझुनू जिले से आते हैं, यदि आपके मकान या कृषि भूमि को वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर दे तो आपके पास किसी न्यायालय में भी जाने चुनौती देने का अधिकार नहीं है। आपको केवल उस बोर्ड के सामने पेश होना होगा जिसने आपकी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर आपकी जमीन छीन ली है। अर्थात चोर, थानेदार तथा न्यायाधीश की सभी शक्तियां वक्फ बोर्ड को दे दी गई हैं। माननीय एक्ट के अकूत शक्ति संपन्न अधिकारों के प्रावधान देकर ऐसा लगता है मानो मात्र हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध आदि की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए यह एक्ट विगत सरकार ने बनाया है, जिसमें पीड़ित पक्ष से किसी अदालत में चुनौती देने के अधिकार को भी छीन लिया गया है। महोदय, तमिलनाडु के त्रिची जिले में 95% हिंदू आबादी वाला एक गांव है चैनथरई। बोर्ड ने पूरे गांव की संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। आश्चर्य को उस गांव के 1500 वर्ष पुराने मंदिर को जो इस्लाम को आने से पूर्व बना था उसे भी अपनी संपत्ति घोषित कर दिया। वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्तियों के दुरुपयोग का यह जीता जागता उदाहरण है। महोदय, एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते। यह एक्ट देश की न्यायपालिका की स्वतंत्रता व श्रेष्ठता के खिलाफ है, देश में अलगाव व नफरत पैदा करता है, देश की एकता तथा अखंडता तथा सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ रहा है। महोदय, मैं इस एक्ट का निचोड़
एक वाक्य में ये बोलना चाहूं तो कहूंगा कि वक्फ एक्ट 1995 भारत में इस्लामीकरण स्थापित करने का सबसे बड़ा हथियार बन गया है। अतः मैं सरकार से देश हित में इस असंवैधानिक और अतार्किक वक्फ एक्ट 1995 को तत्काल रद्द करने की मांग करता हूं। श्री वाइको, Sir, he should substantiate the facts, and sir, you should take I'll take it. and remove Take your, Shri Vaiko, Shri Vaiko, take your seat, honorable member. Take your seat. Take your seat. Solved by the government of Karnataka. Nobody is raising the already solved the problem. Shri Vaiko. Mr. Chairman, sir, this has been already settled by the government Shri of Vaiko. Tamil Nadu. Then why he is raising this here? It is unwarranted. Honorable member. Yes. Shri Vaiko, please continue. Name is not in the list, but he is calling you out of the list. Shri धनंजय महादिक. धन्यवाद सर, आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया। सभापति जी, मैं समझता हूं किसी भी शहर का अगर पूरा और परिपूर्ण विकास होना है तो उसे अच्छी कनेक्टिविटी होना जरूरी है, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी हो, रेल कनेक्टिविटी हो, और सबसे महत्वपूर्ण है सर एयर कनेक्टिविटी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसी बात को संज्ञान में लेके एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना आरसीएस स्कीम, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, जो छोटे शहरों को बड़े शहरों से जोड़ने के लिए उड़ान योजना लागू की थी। उड़े देश का आम नागरिक ये कह के जो हवाई चप्पल पहनेगा वो भी हवाई जहाज में सफर करेगा, ऐसी स्लोगन देके ये योजना शुरू की थी सर। सभापति जी, महाराष्ट्र में सोलापुर जिला एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा जिला है सर। यहाँ पे स्पिनिंग और वीविंग बहुत बड़े पैमाने पे काम होता है। सोलापुरी ब्लैंकेट, सोलापुरी तौलिया, नैपकिन पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है सर। यहाँ पे देश की सबसे ज्यादा शुगर फैक्ट्री सोलापुर में है सर, 38 शुगर फैक्ट्रीज है। यहाँ पे पोमोग्रेनेट और ग्रेप्स बहुत बड़े पैमाने पे एक्सपोर्ट होता है। और इसी के चलते जो यहाँ पे सोलापुर में होडगी रोड में सर, हाफ मिनट सर, क्वेश्चन आवर सोलापुर सर, होडगी क्वेश्चन नंबर 46 प्रोफेसर मनोज कुमार झा। थैंक यू ऑनरेबल। दूसरों को दे दिया चांस। क्वेश्चन नंबर 46 ऑनरेबल मिनिस्टर। नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। मासूम चेहरा लेकिन सीरियल किलर वाला दिमाग। My supplementaries are very basic. First is नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी इंडिया न्यूज। अब तक की and सबसे whether बड़ी any खबर। action has been taken against the authorities who demolished the slums without giving prior notice of demolition नमस्कार, to मैं the गुंजन dwellers. शर्मा और आप ऑनरेबल मिनिस्टर। Sir, I am very grateful to the honourable member for having raised this question, because this provides me an opportunity not only to share some facts, but also to provide a perspective. I would just like to start at the beginning. The honourable member has used the term demolish, and he has used the word slums. Let me state and submit to this House, sir, that the policy of the government of the National Capital Territory of Delhi is a policy which was enunciated by the government of the National Capital Territory of Delhi on 11th December 2017. Personally, whenever I have appeared before this August Assembly, always suggested that we use terms like informal settlements, because that term describes what actually happens. The term slum, sir, if I have your permission, is not only a pejorative, but it also points in the direction of failure of policy and other issues. This policy of the government of Delhi
of 11 December 2017, which, via the subsequent notification, has been turned by the government of Delhi as the Mukhyamantri Awas Yojana, but which is actually a slum rehabilitation or an informal settlements relocation policy, stipulates in very clear terms, and I want to read out a few basic provisions of this policy. It stipulates, sir, that eligibility for rehabilitation or relocation should be there for all Jhuggi Jhopri Bastis, and I choose my words very carefully. Jhuggi Jhopri Bastis which came up before 1st January 2006. These shall not be removed without providing them alternate housing. Jhuggis which have come up, now these are individual Jhuggis, which have come up after this or before 1st January 2015 shall not be demolished without providing alternate housing. This is the stipulation. It goes on to say, no new Jhuggis will be allowed in Delhi. No new Jhuggis comes up after 1st January 2015. If any Jhuggi comes up after this date, the same shall immediately be removed without providing them any alternate housing. It also goes on to say that the government of the National Capital Territory of Delhi will use the following methods to ensure that no new Jhuggi comes up. Government of National Capital Territory of Delhi has stated that procuring satellite maps every 3 months to keep an eye on any new constructions, new illegal constructions would not be removed immediately. Number 2, Government of National Capital Territory of Delhi is willing to do joint inspections with landowning agencies at regular intervals, and any fresh Jhuggis would be removed immediately. This is the Delhi government policy, sir. Number 3, Government of National Capital Territory of Delhi would enroll volunteers from Jhuggi Jhopri Bastis who will act for the government and would inform government if any fresh Jhuggi comes up in the area. Honorable Member, now I Honorable want to Minister, come. Pointed response. Pointed response now, sir. The 7 government colonies which are coming up for redevelopment are spread over an area of 536 acres. 536 acres. And the number of Jhuggi households which have been identified, both eligible and ineligible, is 507, which means what we are dealing with is less than 1 Jhuggi per acre of land. It is 0.8 acres. That is 1 Jhuggi in less than 1 acre of land. Now, what we have done in terms of eligibility, for rehabilitation relocation, 100 EWS flats at Narendra have been purchased from the DDA, out of which 90 have been allotted to eligible Jhuggi households, of which 5 have already taken possession. After that, what happens, sir, is a large number of Jhuggi dwellers, whether eligible or ineligible, went to the courts and obtained the number of stays. What we have here is, sir, in Sarojini Nagar, 136 applicants went to the Supreme Court, 53 to the High Court. I can list out all these. What has happened, sir, here, and the answer provides, in the particular question that has been asked, the answer is in the body of the question has been answered in the body of that. There were apparently 12 there. Those who are ineligible, the local authorities will or they will move out. The eligible ones, we have provided alternate accommodation. Only very few have moved in there, and we stand ready to pursue that process, but it will be subject to the clearance of the courts, both the Supreme Court and High Court. Supplementary 2. The Minister beats Winston Churchill in using the words. Thank you, sir. But my question was whether any action has been taken on authorities who were involved. My second supplementary is that in view of Ajay Makhan versus Northern Railway 2019, the judgment, DDA had to follow rehabilitation policy of Delhi government. I would like to know from Honorable Minister, which rehabilitation and resettlement policy does DDA follow if you say
if you undo, I won't say demolish, undo an informal settlement? Thank you. Honorable Minister, very pointed response, a pointed question. Very pointed response to a very pointed question. Sir, the answer simply is that the policy pertaining to the Delhi government has been framed, has to be implemented by the Delhi government. I can tell you what the DDA is doing. Sir, I can tell you that there are a total. Take your seat. Sir, there are a total. Honorable member, take your seat. There is a method how to raise an issue. Sir, there are a number of what are called JJ clusters. There are 299 JJ clusters which are under DUSIP. Honorable Minister, and there are 376 under DDA. Honorable Minister, the honorable member has pointedly sought response to a specific situation. You may respond. May I respond to that? Please. Out of the 300 plus 370 or so JJ clusters which are with the DDA, we have already done surveys in 210 of them. Recently, the Honorable Prime Minister released 3,000 flats in Kalkaji to the beneficiaries. 2 such other projects are ready. And we have under very advanced stage of processing the conversion of all the DDA clusters, JJ clusters under the DDA, which will be given modern flats. Except, let me place on record, those clusters which are under DUSIP, I have said since the Delhi government has not moved on them, the central government will conduct a survey and get them built into modern flats. Because the Delhi government has not moved on that. Shri Vijay Sai Reddy. Sir, we have only 3.52 homes have been sanctioned in situation development, redevelopment, sir. That is redevelopment of slums for providing concrete homes to slum dwellers in the same place under Pradhan Mantri Awas Yojana. And why is this vertical the most underperforming among the all components of PMAY scheme? Honorable Minister. Sir, the Pradhan Mantri Awas Yojana is carried out under 4 verticals: affordable housing in partnership, beneficiary-led construction, CLSS, and in situ slum rehabilitation. Sir, all 4 verticals move on their own dynamic. The BLC vertical is if you own traditional family home, you will come to the government for a loan. The CLSS perhaps looks to be faster because it's a very simple. You locate a house which you want to buy or an apartment which you want to buy, typically a young couple which has got married and they need to raise a bank loan. They will go for a CLSS loan, they will get 3% upfront. In situ slum rehabilitation by its very definition requires the uprooting of people for some time. Let's say we have a policy now, jahan juggi wahi makan. That is, if you have an informal settlement in a place X, we will settle you there. But in the interim period, you will have to move to another place till it is done. So I think there may be an explanation. But in situ slum rehabilitation, as I said, we have done surveys of 210 JJ clusters. We have already got 3 very good showcase pieces, which the Prime Minister released one. And all the others are going to come up. One in January and the other very soon. Shri Sushil Kumar Gupta. माननीय मंत्री जी, दिल्ली की सारी जमीन डीडीए के पास है। डीडीए दिल्ली में सलम बनाती जा रही है। लैंड पुलिंग पॉलिसी में पिछले 20 साल से एक भी आपने प्रोजेक्ट पास नहीं किया। दिल्ली के किसान सप्लीमेंट्री ऑनरेबल मेंबर उसे सप्लीमेंट्री बात हूं सर। मैं सर अपनी बात पूरी कर दूं सर। मैं पूरी बात मैं अपना क्वेश्चन कर लूं सर। कम भी क्वेश्चन। दिल्ली के अंदर हर चुनाव में भारत सरकार बड़े बड़े बोर्ड लगाती है, जहां झुग्गी वहां मकान। दिल्ली के अंदर रेलवे लाइन के किनारे सैकड़ों स्लम है। दिल्ली इंतजार कर रही है। मेरा क्वेश्चन वही है सर। मैं क्वेश्चन पा रहा हूं सर। सीधा क्वेश्चन पा रहा हूं सर। आज तक केवल 2 प्रोजेक्ट पास हुए, कठपुतली कॉलोनी का और कालका का। वो आपकी सरकार आने से पहले। आप कौन से प्रोजेक्ट कब ला रहे हो और कब इन झुग्गी वालों को मकान दे रहे हो, सपने दिखाते रहो। Honorable Minister, I am very happy to hear from the honorable member who belongs to Delhi that he has just handed over all the clusters, 299 JJ clusters to the DDA, which are under DUSIP. Let me correct his understanding. Land is not owned all by the DDA. There is in Delhi DDA land, there is
land owned by the LNDO, and there are other issues where you have a role to play. But if you decide to abdicate that responsibility, I've already offered all 299 clusters, we'll take over and develop them there. Because we have not even received a proposal from the state government for this. Sir, I have a pointed question for a pointed response. For all such projects, will the government assure this House that the dwellers there, the poor people, they will be rehabilitated and then only the project begins? I thought I took the liberty of explaining in some detail what the policy is. This is a policy enunciated by the Delhi government in an order of 11 December 2017, which says that all settlers or informal settlements before 2016 in terms of bastis and all individuals who have there, they have to be rehabilitated. And this is precisely what the government in the center is doing. We would like all the others similarly to follow this. No, actually they've gone to the court. Otherwise, you would have a situation. Per acre, there is less than one juggi. And that also is in front of the court. And we follow the norm scrupulously. I wish that were the case in some other areas also. Question number 47, Shri Mastan Rao, Bida. माननीय सभापति महोदय, सभापटल पर रख दिया गया उत्तर. Honorable Minister. सभापटल पे उत्तर रख दिया गया सर. हाँ, सभापति महोदय. आप तो आधा घंटा ले ही लोगे. Thank you, Chairman sir. Question number 47. Honorable Minister. माननीय सभापति महोदय, उत्तर सभापटल पर रख दिया गया है. Supplementary one. Sir, thank you, sir. Does the government intend to increase the provision of repayment of loans for MSMEs from 90 days to 180 days, as the working cycle of MSMEs may extend beyond 90 days and improve their repayment ability? Supplementary two. माननीय सभापति महोदय, माननीय मेंबर ने अच्छा प्रश्न किया है. विशेष रूप से उन्होंने जो एमएसएमई की ऋण सीमा है उसे बढ़ाने की बात की है. विशेष रूप से जो एमएसएमई है, हमारे जो क्वेश्चन में जो दिया गया है